हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मैं कहूंगा टैलेंट का भंडार है। दिस इज लाइक एंटायर थिंग, यू नो, एवरीवन आउट हियर इज सुपर टैलेंटेड। शुरुआत वरुण से करे, अनुप्रिया, अगेन रिद्धि, चैंग, गौरव अगेन, एंड इतना सारा टैलेंट आप सब एक साथ हो। इट्स माय ऑनर टू बी आउट हियर। sweet. That's so sweet. बट शुरुआत करते हैं असुर से। यू नो, वन जब सीजन आया था तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्या हो गया था, किसी ने नहीं किया था। एंड आई रिमेंबर जस्ट कोविड के कुछ वक्त पहले आया था, एंड उसके बाद जो हुआ था, ब्लेसिंग इन डिसगाइज कह सकते हैं कि पीपल स्टार्टेड वाचिंग, टॉकिंग अबाउट इट, एंड 3 साल से लोग वेट कर रहे थे सीजन 2 के लिए। लेकिन क्या रिएक्शन रहा, कैसा रहा, आप सब बता सकते No, it's. I think the same. It's been the same. The reactions. Pehle wale, maybe we were not expecting. Like you said, no one was. We were also not expecting it's gonna blow out of proportion the way it did. We were sure कि हाँ अच्छा है, but we thought कि it was gonna be a niche show. कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, जिनको लगेगा उनको बहुत अच्छा लगेगा. Second season also, we thought that it's going to be difficult to top it. But thankfully, I think we did manage to do that because I think we got I think we got a much bigger and better response in the second season. Yeah. So yeah, I mean, we knew that we were making a very good show in the first season also, but at that time personally मुझे लगा था कि चलो, because हमने promotions नहीं किए थे, कुछ नहीं किए थे, एकदम से drop हुआ था. And अच्छा content है, but ऐसा बहुत अच्छा content और जो niche content होता है वो कई बार miss out हो जाता है. And this one just got rave reviews and it became the talk of town. I at that time felt that COVID helped. Because at least it went through word of mouth. I was expecting a very similar thing this time, that word of mouth se hi pick up karega. Again, we haven't really done any promotions, to be very honest. And yeah, 3 years delay. The audience has been very loyal, thank you. But also, again, a very niche show. I didn't expect this kind of response so soon. I thought it would pick up over a period of a week or 2 weeks or 3 weeks. But I didn't know that it just will become a rage. And amongst good content, what I'm really proud about this time is that there's no COVID happening. There is really no time. People are busy in their daily life, and there is a lot of content that has come up in the recent past. And yet ASUR has made that kind of an impact. Wow. Yeah, I think I agree with everything Anupriya is saying. So, ditto. Cut, copy, paste. Good, nice process. Chang, adding to the group, Sorry. adding to the group, na this. Yes, and I hope that I've added a lot of value. इसलिए season 2 की इतनी तारीफ हो रही है. नहीं, but I feel that ASUR as a show, it talks a lot about mythology. It talks about superstition. And if I am allowed to probably add the superstition to it, I think ASUR की जो किस्मत थी, वो ये थी कि जब भी जिस टाइम पे वो आया ना, चाहे वो कोविड के टाइम पे आया हो, लॉकडाउन पे, हाँ, it just went everywhere. या फिर अभी भी जब हम कहते कि थोड़ा डिले के बाद आया, इतने टाइम बाद आया, आई थिंक इसकी किस्मत, इसकी टाइमिंग लिखी हुई थी, एंड दैट इज व्हाई इट हैज कम व्हेन इट हैज कम, एंड इट हैज गॉट द लव ऑफ पीपल, एंड आई एम जस्ट वेरी ग्लैड दैट आई एम पार्ट ऑफ द शो एंड इट्स गेटिंग ऑल दिस लव. Wow. Gaurav? You know, I feel that before season 1 of ASUR, there were Sacred Games in Mirzapur, which did wonders for OTT. True. But I believe ASUR single-handedly, I think we can say that, it actually paved the way for a big chunk of audience on OTT, because when it came during lockdown, there were very few people. I mean, there was still a big chunk in India, they weren't really aware of OTT. And ASUR was one of those shows that brought them there. And the legacy, I mean, still continues. I mean, we still have those hardcore fans who waited for next 3 years. And they're still, I mean, you know, every single day, someone or the other, we would get a message, ki, when is season 2 coming out? When is season 2 coming out? And that wait has been worthwhile. And I mean, like Anupriya said, there's no holiday. I mean, it came out during one of the weekdays at midnight, at 12. There was nothing, no lockdown. And a lot of stuff dropped on second. Actually. Like I actually was wondering कि second June को काफी कुछ release हो रहा था. और मैंने सोचा भी था कि first June को मतलब क्या सोच रहे हैं हम? Like things which are available to watch. Season 2 did wonders. So yeah, I mean, it speaks for itself. Of course. Yeah. I think the success of ASUR is really assuring for everyone in the industry, because मुझे लगता है कि एक अच्छा शो किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, चाहे प्लेटफॉर्म बड़ा हो या छोटा हो, आप प्रमोट करो या ना करो, एक अच्छा शो हमेशा नोटिस होता है OTT प्लेटफॉर्म्स पे. Good things are difficult to hide. Good things are difficult to hide. Wow. Yeah. So I think ASUR is an example of that. Right.
वरुण, आपसे अगर बात करें तो मैं आई गेस आपको मैं और मिस्टर राइट के वक्त मिला था उनके ऑफिस में 9 साल पहले। या बहुत साल पहले, एंड तब आपने एक चीज़ कहा था कि टीवी के बाद यू सेड यू विल गो वेरी स्लो, आप कम काम करोगे लेकिन क्वालिटी वाला काम करोगे। ऑफ कोर्स तू है मेरा संडे में बहुत तारीफ हुई, लेकिन उसके बाद एक वक्त था, बट कह सकते हैं विद असुर वो फाइनली जो आप चाहते थे वो पूरा हुआ। हाँ, that's only coming true in my life now. I've gone through a lot of perseverance, and I'm not going to talk about the hard work that I put in because everyone puts in hard work. But yes, it's only starting for me now. That I'm really, really proud of the work that I'm doing, and I think if I was not getting the kind of work that I'm getting, I think I might have quit acting because I'm not the kind of person who can do something being unhappy. And I know this because I've done a few things that I didn't want to do, and it kills me on the set. I then have to start thinking I'm doing this for money and stuff like that, and it just kills me. So I'm really glad. सेम अनुप्रिया, आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा रहे आप, लेकिन जब OTT पे, मैंने पिछली बार भी कहा था कि जिसको भी मतलब कहते हैं ना दैट टच, जहाँ भी आप है वो सारे के सारे शो सुपर हिट सुपर हिट सुपर हिट सुपर हिट, मतलब थू बट लेकिन क्या मतलब हाउ डू यू नाउ, अब वो सक्सेस को भी आप किस तरह से बैलेंस करते हैं कि यार इसकी भी सक्सेस है, ये भी सक्सेसफुल है, ये भी सक्सेसफुल। नजर लग गई, हाँ लगी मुझे नजर, मुझे लगता है like no, to be very honest, and I can say this aloud, last 1.5 years have been like, I did stuff, a lot of my stuff got pushed, a lot of them, 1 or 2 things got stalled, and now there'll be a series of releases. I haven't had a release for 1.5 years, I think maybe almost 2, and to the extent that people had now started asking that where are you, and personally also for the last 1 year my journey at a personal level has been very different. I've been investing a lot in me personally as an actor, as a performer, traveling, in learning new things, because I realized कि जो मैंने पहले अपनी लाइफ जी थी उससे जितना मुझे करना था मैंने वो यूज करके एक्टिंग कर डाली। अब नया कुछ लाने के लिए I have to become a new person and invest more in myself. So my trajectory as a human being, as an actor, and a lot to do with, I think the motivation is to become an even better performer. And that was why I wanted to search a newer self. So ऐसा बिल्कुल मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आती कि जो भी मैंने किया वो उतना, हाँ I was lucky in choosing the right projects and thanks. इतना right? क्योंकि नहीं, अब वही बात है जो हम बात कह रहे थे ना, अगर चीजें आपको सही लगती हैं वो अच्छी थी, ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी प्रोजेक्ट था जो, उसके रीजंस मेरे अलग हो सकते हैं। जैसे आश्रम मैंने किया क्योंकि प्रकाश झा थे, मुझे लगा मुझे आगे कभी चांस मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, मिल रहा है मैं इनके साथ काम करूंगी। बाकी फिल्म्स के अलग रीजंस थे, लेकिन हर जगह मेरा कैरेक्टर अच्छा था, मुझे पता था मैं कुछ कर रही हूँ। इनफैक्ट असुर के लिए एज आई हैव बीन सेइंग कि आई वाज अ लिटिल conflicted of the character at that time in the first season, but meeting Oni, knowing Tanveer, knowing the direct actors and the concept was enough. So your reasons have to be right, and if they are, you mostly end up doing the right delivering things. hits. And then I have also done couple of things unfortunately in the recent past which I had doubts about. I used to, मेरे साथ उल्टा हुआ, जब शुरू में मैं बहुत चिल होती थी क्योंकि मुझे कुछ मेंटेन नहीं करना था, तो मैं अपना टाइम लेके, अभी भी मैं ज्यादा चीजों को ना कहती हूँ एज अपोज टू सेइंग यस, बट एक बार आपको लत पड़ जाती है ना सेट पे होने की, देन यू वांट टू कीप वर्किंग। एंड कोविड के बाद तो ऐसा था कि बस काम करना है यार, बहुत हो गया, लाइक आई वांट टू बी ऑन दिस सेट, एंड देयर वर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई न्यू आर नॉट एज पर माय sensibilities, and they did what I thought they would do, so there is no रिद्धि, आपके भी काम की जर्नी तो बहुत कमाल की, लेकिन OTT पे जो असुर के बाद जो शुरुआत हुई, इतनी तारीफ हुई, मैरिड वुमन में तो बहुत ज़्यादा तारीफ हुई, उसके बाद तो ये जो वेरिएशंस आपने हर साल एक डिफरेंट कम किया, लेकिन बहुत कमाल का कंटेंट आपने दिया, तो उसमें जो डिफरेंट रोल्स हर एक में, लाइक इसका काम, वो वाला, पिक्चर्स डिफरेंट, टोटली डिफरेंट, तीनों में से किस तरह देखते हैं आप OTT जर्नी को? मैं कैरेक्टर्स वैसे ही चूज करती हूँ जो डिफरेंट हो मुझसे, मुझे वो ही करना पसंद है। और जैसे वरुण ने कहा, आई वाज स्माइलिंग व्हेन ही वाज सेइंग दैट बिकॉज आई ऑल्सो थिंक द सेम। मैं भी उन सेट्स पे रह चुकी हूँ जहाँ मुझे पसंद नहीं आ रहा मैं क्या कर रही हूँ, एंड आई एम अ बिग क्रिबर। इफ आई डोंट लाइक और इफ देयर इज समथिंग नॉट, I am not this positive person जो everybody says oh my god whatever, or people think कि मैं बोलती हूँ, but I can really crib if I am not happy about something. So for me बहुत ज़रूरी है कि टीम बहुत important हो, मतलब टीम is invested firstly in me,
in the story that they're doing. And I think OTT just opened that up for actors like me, you know, who didn't want to do it for the money, who didn't want to do it for fame, glamour, all of that, who just wanted to do it for the craft. Acting मेरे लिए therapy है, performing मेरे लिए therapy है. So it's a very personal exploration that I am on. And मैं वही करना चाहती हूँ जहाँ मुझे एक्साइटमेंट हो आगे करने की, वरना एग्जैक्टली जो वरुण ने कहा है कि आई क्विट एक्टिंग, आई विल नॉट एक्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्टिंग. आई हैव टू बी in a project where people are invested in me passionately as an actor, and I am invested equally in the story. चैंग, आपसे तो मतलब क्या, मतलब मल्टी टैलेंटेड इतनी हर Yes. बार, तो आपके तो जो फैंस का हमेशा एक ही सवाल जो रहता है कि कहाँ पे मतलब बैलेंस किस तरह करते हो सिंगिंग एंड एक्टिंग में? एक्टिंग में भी जो काम कर रहे हो अच्छा होता है, सिंगिंग में भी इस साल मॉडर्न लव में भी अगेन वो तो मतलब काफी वायरल हो गया था. पार्टी भी बहुत करता है. पार्टी तो ही इज देयर इन ऑल पार्टीज. या हर Travel. Travel. I am always for travel over parties. लेकिन एक वक्त था जब मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मुझे कुछ ज्यादा बैलेंस करना है. मुझे लगता था कि मेरी सिंगिंग अपना स्थान ढूंढ लेती थी और मेरी जो एक्टिंग है या रियलिटी में जो मैं कर रहा हूँ होस्टिंग के या पार्टिसिपेशन के, इट हैड इट्स ओन स्पेस. अब मुझे लगता है ना लास्ट कपल ऑफ इयर्स बहुत कुछ ओवरलैप हो रहा है और अब मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ कि किसको किस तरह से संभालना है. बट जब आप कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो ऑडियंस की तरफ से आता है, आई हैव रियलाइज्ड द क्वेश्चन प्रीटी मच रिमेन्स द सेम. जब मैं कुछ एक्टिंग का काम करता हूँ लोग बोलते हैं कि यार वी लाइक योर वर्क, बट आज का गाना नहीं गा रहे. फिर जब मैं कोई गाना बनाता हूँ, यार क्या अच्छा गाना था, लेकिन अब एक्टिंग नहीं कर रहे, आपकी दिखते नहीं है. तो मैंने रियलाइज किया कि अब वो जो एक एक्सपेक्टेशन है या एक क्वेश्चन है उसको मैं उस तरह से एड्रेस नहीं कर सकता. व्हाट आई कैन डू इज दैट आई एंजॉय डूइंग बोथ दीज थिंग्स, एंड जब तक वो नॉवल है, जब तक वो चैलेंजिंग है, मैं करते रहूंगा. और बस कमेंट्स में यही लिखता रहूंगा कि अच्छा आपने मेरा गाना नहीं देखा, अच्छा आपने मेरा वो शो नहीं देखा. That is what I can do, and I really enjoy doing these two a lot. मैं एक टाइम पे कहता था कि मेरे लिए तीनों बहुत important है, hosting, acting and singing. But over the years I've realized that in terms of novelty, in terms of the challenges that it throws, singing and acting, ये मेरे लिए बहुत important हो जाता है. Wow. And thankfully I am also in a place where I can explore that. कभी थोड़ी दिक्कतें हो जाती हैं ये सोच के कि unlike my contemporaries, I don't get offered that much. तो जो उतना है उसमें से चूज करना कभी मुश्किल रहता है, बिकॉज अगर आपको मिल ही रहा उतना है तो आप उसमें से क्या हाँ बोले और क्या ना बोले. That becomes a slightly difficult question for me, but whatever comes my way, I believe that decisions जो लिए हैं अच्छे लिए हैं, and ASUR is definitely one of those very good decisions. गौरव, सेम आपने एक इरोटिक थ्रिलर से शुरुआत की थी, यू नो, लव गेम्स अगेन, लेकिन Which is this? जो Which one? What erotic thriller are we talking about? लव गेम्स, बट ओटीटी पे यू नो यू हैड अ वेरी डिफरेंट जर्नी. आपके जो दोनों शोज रहे, काफी नाम हुआ है, काफी उसके लिए रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसके? See, I think it's been a journey from where it started to, I mean, even in my head space, a lot has changed over a period of time. You know, I mean, when I came to Bombay, what I wanted to do was what I wanted to achieve was different than what I want right now. And that is also reflecting in my work. So that has changed. And I think with OTT, not just actors, like every creative person in the industry has got a platform to put what they want. I mean, just put out and do stuff like that. So those films, I mean, that film didn't do well. And I mean, for various reasons. And after that, I had there was this gap where I had to introspect. I had to do a lot of thinking about what I want and where to go from here. And I think that's worked. And I think for me, like I've always felt that next big thing is going to be a lot of small things put together. Is going to be the next big thing. So yeah. मैं यू नो मराठी सिनेमा में मतलब आपका जो काम है, अगेन बहुत कमाल का काम किया है. थिएटर में भी आपने बहुत कमाल का रहा है. अगेन यूट्यूब स्पेस पे जब ओटीटी के पहले भी था, आप लोगों ने शुरुआत जो की थी वो जो एक बहुत ही नयापन था. बट कहीं पे आप कहेंगे कि असुर के बाद यू नो जो पूरा पैन इंडिया जो है, दे स्टार्टेड नोटिसिंग योर वर्क. एंड मैंने कुछ लोगों से सुना भी था, दे स्टार्टेड वॉचिंग योर मराठी फिल्म्स आल्सो ऑन ओटीटी, एंड दैट एंटायर यू नो रिएक्शन वाज वेरी डिफरेंट. आपसे जानना चाहूँगा. हाँ, मतलब मराठी में मैं काम कर रहा था ना, आई वॉज हैप्पी डूइंग दैट, क्योंकि वहाँ पे भी अचीव करने जैसा बहुत कुछ है अभी भी मुझे.
but suddenly I think after the lockdown the OTT scene has opened up. और मुझे लगता है कि if you are a hard working actor, if you are even like moderately talented in any part of the country, आपके लिए बहुत काम है available, and I think that's the best part in today's times. I think all of us are on the same page now, and there's equal opportunity for everyone. बस मुझे थोड़ा पहले डर लगता था जैसे फर्स्ट सीजन के टाइम पे असुर के, बिकॉज आई थिंक इन मराठी में ज़्यादा काम किया है. इट्स अ स्मॉलर इंडस्ट्री एंड when you go on a news set you don't really have to prove yourself to anyone there. People have seen your work and that's how the industry works. But मुझे थोड़ा ऐसे लगता था कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम कर रहा हूँ. बट अब मुझे लगता है कि असुर के सक्सेस के बाद मैं थोड़ा कंफर्टेबल फील करने लगा. बट ओटीटी की स्पेस के साथ साथ जो फिल्मों की बात करेंगे तो फिलहाल तो एक बहुत बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन आने वाली बहुत बड़ी बड़ी फिल्में, किस फिल्म के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं? बहुत सवाल है, लेकिन अब यहाँ से सेंसरिंग शुरू हो गया है तो लेट्स. I am also Good waiting one. for Donkey. डंकी. Donkey is donkey in Hindi. Donkey, Rajkumar Hirani's film with Shah Rukh. अच्छा. Oh. मैंने हाँ. थोड़ी बड़ी जल्दी पकड़ लिया मेरे को. हिंदी में donkey is मतलब that's what they've titled it. नहीं है तो डंकी. हाँ. I'm also waiting for Donkey. Okay. Now for Tiger and You have been part of the last Tiger and now this one, Yeah, right? yeah. Home film. yeah. मुझे पता ही नहीं कौन सी आ रही है. आदि पुरुष आ रही है, नहीं, जवान है, अरे यार, डंकी मैं- है, तुम टाइगर है, बताओ यार. एनिमल है, सब ऐसे ही ना. Animal. I am very excited for Asur season 3 because I have a very prominent role. Jio Cinemas guys are signing you instantly for this. Season 3 in cinemas. Yeah. क्यों नहीं? Why not? Yeah, I think we are all just waiting for good I'm work more manifesting than that anything his else. role कि अच्छा so काम much हो, in अच्छा Asur काम 3. बने और उसको अच्छे काम को appreciation मिले. जी. And we all actually want कि हम लोग सब OTT मानते हैं, हमको OTT से बहुत मिला है, but films also need to be doing very well. Of course. I just hope that people realize that content is important True. all across, and something I would love to say कि somewhere the South has got something right. I don't know वो passion बहुत है या कुछ तो उन्होंने पकड़ लिया है सुर जो हमारे यहाँ थोड़ा बहुत मिस हो जाता है in the film space. वो I hope वापस आ जाए पूरा बिग वे में, I am excited to watch Ridhi in Jawan है ना? Yeah. That's Not all. in चलो, Tiger. that is perfect branding. Jawan. Yeah. why not Tiger? because I want to see Jawan first. जवान पहले ही आ रही है. Ridhi in the same frame. वैसे वो भी रेड चिलीज के साथ काम कर चुके हैं, इसीलिए अभी वो Okay. इनका होमवर्क बहुत Very cool. चलो, on that note, wish you guys all the Thank best for all you. your future Thank ventures you. and thank you for Thank being you, here. Thank you so Sir. much. Thank you. Thank you.